Hello everyone. Let's start with a new topic, methods of studying human genetics. And under this, we are going to look at various tools and techniques that scientists use to understand how traits and diseases are inherited in humans. And we are also going to look at various tools such as pedigree analysis, Punnett square, PCR, FISH, karyotyping, genome sequencing, etc. And then a brief look at what human genetics is. The human genetics is a study of how traits and disease are passed across generation. And under human genetics, we are going to look at the structure, functions, and variations of human DNA. So these are the brief basics. Now the introduction. I'm a little bit fast here because this is a quite a long lecture. So human genetics, it understands how traits are passed down, how disease are inherited, what are the pockets of disease concentration, what are the vectors, and how different vectors are affecting different kinds of population, different pockets of population, and how human populations are evolving. And in this method, we are going to look at these six methods: cytogenetics, Mendelian genetics, twin studies, Sib-Pair methods, population genetics, and molecular genetics. Now, before proceeding on to explaining each of these methods, let's have a look at the basics, because these basics are very important. They will accompany you in the whole journey of preparation. Now, the first basic starts with DNA, deoxyribonucleic acid. So, DNA, it is made up of nucleotides. Nucleotide, it is a combination of three things: uh, pentose sugar, a phosphate group, uh, pentose sugar, then phosphate group, and then nitrogenous bases. Nitrogenous bases. Now, when you look at the structure of DNA, it is like a twisted ladder. एक ये पहले plain ladder है, and when you rotate the upper hand in anti-clockwise direction and the lower hand in the clockwise direction, you will get a twisted structure. This one. So ये DNA की twisted structure है, known as the double helix. Now जो hands हैं, they are made up of pentose sugar and phosphate group, and जो rungs हैं, middle rungs, they are made up of nitrogenous bases known as ATCG, adenine, thymine, cytosine, and guanine. Now the DNA structure तो आपको बता दी, double helical structure, a twisted ladder, and made up of these three things. Together they are known as nucleotides and four bases, ATCG. And ultimately, the DNA in itself, it is nothing but a repetition of this chain, ATCG. A pairs with T, then C pairs with G. And this structure, it keeps on going further, TA, GC, like that. So if you going to look at the structure of DNA कि माइक्रोस्कोप में कैसे दिखती है, so it's nothing but this repetition of unit. Now, how this repetition of unit is going to code for all the functions that our body perform, because it is said that DNA contains all the necessary information for our body to survive. यानी जितनी भी information है, like even the way I am using myself, like the way motor coordination, कि I am speaking, the brain I have, the whole physical structure, सबका कोड जो है डीएनए में. नाउ फिर साथ में मैं एक कॉन्ट्राडिक्टरी चीज भी बोल रहा हूं कि डीएनए इज नथिंग बट रिपीटेशन ऑफ दीज न्यूक्लियोटाइड बेसिस. सो इसमें जो वेरियस अपीयरेंस है या जो जीन्स की हम बात करते हैं, बिकॉज it is the genes that are expressed. Genes for nose, genes for hair, genes for skull shape, genes for cranial wall, genes for teeth, genes for dental arcade, genes for hands, genes for limbs. सबके लिए जो है genes हैं. Now what genes are? So यहाँ पे दो चीज. This structure which keeps on repeating and it goes on indefinitely.
Now ये structure अपने आप में it says nothing. But then if we a hypothetical scenario, if we number the sequence, like the first it stands for 1, then it keeps on going numerically. Now इसी पूरी sequence में some section stand for a particular gene. Let's say 3 to 7 it stand for teeth. Then there another section 11 to 33 it stand for nose. Then there might be 121 to 273 it might stand for limbs. So that's how genes work. So genes are nothing but a particular section of any DNA, and those section they code for a particular expression, और जो outward expression है known as the phenotype. That phenotype is governed by genes, and genes are governed by sections of particular DNA, and DNA is nothing but the repetition of these 4 nitrogenous bases. Now here a gene is a specific section of DNA that contains instruction. So let's say 21 to 42. This section it has instruction for, let's say, Broca's area. Now this section, it is called a gene. Then the way it is expressed, it will be known as the phenotypical expression of phenotype. Now let's unwind further. So DNA packaging, chromatin, histone, and chromosomes. So as I've already told you, DNA is extremely long, and DNA cannot float loosely in the nucleus, because all organisms they have the basic unit known as cell, and every cell has a nucleus, and in this nucleus is housed the DNA, which is a loose structure, a loose thread. Now this loose thread it cannot be cannot be left to float loosely, so it has to be wrapped around. So this DNA it wraps itself around, it coils itself around a small protein known as histone. Assume histone to be a चरखी, जो पतंग उड़ाते हैं उस टाइम चरखी जो होती है, a spool. So this spool it wraps or it coils the DNA around it so that it does not remain floating loosely. Then the combination of DNA that is wrapped around histone, जो spool पे उस चरखी पे जो DNA wrapped हुआ है, that forms a structure, a tightly formed structure known as chromatin. Now histones are proteins that help organize and protect DNA. And there are 5 main types: H1, H2A, H2B, H3, and H4. So here, this particular thing, protein. So proteins are the enzymes that are necessary for our survival. They help us perform a lot of functions. And uh, if you want to look at any organism, if you want to understand molecular genetics, then you have to understand these two things. Yeah, in broader terms, if you want to understand evolution, then these two things will help you a lot. First, understand what protein synthesis is, because it is the protein synthesis that helps in the survival of any organism internally. Then the second thing is the reproduction. So these two things are very important, and reproduction means meiosis. So if you understand these two things, then most of the evolution, most of the key concepts of evolutionary biology will be understood. Now back to the spool histone. So these 5 types are there, and the preparation, the process of making histone, it follows the same process of protein synthesis. So यहाँ पे 2 steps मैं दे रहा हूँ, एक तो histone synthesis का, then protein synthesis का. Even though I have a separate lecture for protein synthesis, but still I am giving it a two brief explanations here, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. प्रोटीन सिंथेसिस आप समझ जाएंगे तो आपको जो फिजिकल या फिर जो मॉलिक्यूलर लेवल पे जो वर्किंग है, जो मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स है, उसका काफी अच्छा हिस्सा आपको समझ में आ जाए. एंड बिफोर प्रोसीडिंग, लेट मी टेल यू वन मोर थिंग.
I might sound fast today because this particular lecture it is very long. वो आपको आगे दिख जाएगा. So even though while preparing this whole script, preparing this PDF, मैंने कोशिश की कि इसको और शॉर्ट करूं. बट शॉर्ट करने पर भी इट इज क्वाइट लॉन्ग. ये टॉपिक अपने आप में बड़ा लंबा है. इसलिए आई एम ट्राइंग टू fulfill the parameter of quality along with the limited time frame that I have. So यहाँ पे हीस्टोन सिंथेसिस. सो जो हीस्टोन का कोड होता है इट इज नॉट डीएनए. डीएनए में सबका कोड होता है, तो डीएनए के अंदर इसका भी एक जेनेटिक इंस्ट्रक्शन है, एक कोड है. नाउ अब वन मोर थिंग, दिस वन इज सेल, ये न्यूक्लियस एंड अंदर डीएनए. नाउ डीएनए हैज ऑल द नेसेसरी इंस्ट्रक्शन फॉर preparation of proteins, and proteins are the essential scaffold, the essential skeletal of our inner working. Now जो डीएनए के अंदर जो उसका कोड है, that protein cannot be synthesized by DNA, क्योंकि जो प्रोटीन मेकिंग यूनिट है, जो प्रोटीन मेकिंग फैक्ट्री है, known as the ribosome, it lies outside the nucleus in cytoplasm. Now DNA cannot travel outside the nucleus, so some workaround need to be there. कोई ऐसी चीज है जो यहां से मैसेज कॉपी करके यहां तक लेके आए. So here comes the role of mRNA. So mRNA, it copies the DNA sequence, it copies the code, and it travel outside the nucleus to the ribosome. Now ribosome के अंदर जो प्रोटीन सिंथेसिस है, it works on a system called the conveyor belt. जितने भी मास फैक्ट्री यूनिट्स हो, उन सब में यही चीज होती है इन दिस वे कि कन्वेयर बेल्ट है, एक बेल्ट है, वो चलता रहता है, और जो भी जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस मैन्युफैक्चरिंग है, असेंबलिंग है, या जो टचअप है, जो भी है, वो उस कन्वेयर बेल्ट पे चलते हैं. एक फिक्स टाइम होता है, देन द बेल्ट मूव्स ऑन, और जो प्रोडक्ट है इट मूव्स इन अनदर डायरेक्शन. सो ये कन्वेयर बेल्ट का कंसेप्ट है. सेम कंसेप्ट जो है वो भी राइबोसोम में होता है. नाउ जो एमआरएनए जो कोड लेके आया है, इट इज इन ट्रिपलेट्स, इन ट्रिपल्स नोन एज कोडोन. यानी जो सीक्वेंस होगी इट विल बी लाइक दिस, ATT, इस तरह से. नाउ एमआरएनए डीएनए से वो कोड लेके आया, एंड द कोड दैट it has carried is for the amino acid. The triplet code जो है वो amino acids का कोड होता है, and protein are nothing but the chain of amino acid. So ये कोड लेके राइबोसोम के पास आता है. So first let's say this block is the initiator codon, which is again brought by mRNA. फिर हर कोडोन का जो एंटी कोडोन है, it is provided by the ribosome. So ये फर्स्ट कोडोन है, इनिशिएटर कोडोन, इट हैज बीन ब्रॉट बाय mRNA. उसका जो एंटी कोडोन है, इट हैज बीन प्रोवाइडेड बाय द राइबोसोम. और इस तरह से जो फर्स्ट जो ब्लॉक है, इट इज क्रिएटेड. नाउ द कन्वेयर बेल्ट मूव्स ऑन, फिर दे मूव ऑन टू द सेकंड कोडोन एंड एंटी कोडोन ग्रुप. इस तरह से ये जो है, ये चेन, ये ब्लॉक चलता रहता है. एंड फाइनली जहां भी इसको एंड करना होता है, इंस्ट्रक्शन उसका स्टॉप कोडोन का उसके अंदर ही होता है. एंड दिस होल चेन इट ब्रेक्स ऑफ, इट रीऑर्गेनाइजेस. फिर जो चेन ऑफ अमीनो एसिड्स हैं, दे आर फिल्ड इन बाय peptide bonds, polypeptide bond, and that's why this whole chain is known as polypeptide chain. So this chain, the polypeptide chain, it is known as protein. So that's how histone is manufactured. Similar thing is there. Protein synthesis is a broader term. Histone synthesis is a kind of protein synthesis in which we do have a name कि कौन सा protein synthesis हो रहा है, histone protein. Now sequential explanation आपको दे दिया है, but still first the very act of copying the gene, copying the code, it is known as transcription, which is facilitated by mRNA, messenger RNA, and the copying of message from DNA by the mRNA, it is known as transcription. Transcription means
copying of the gene. Then, since DNA cannot leave the nucleus, so it is mRNA that comes out of nucleus to the ribosome, which are situated in the cytoplasm. Then ribosome, it reads the message and translate that message into a chain of amino acids. And that chain of amino acid is nothing but the histone protein. Then after its making its synthesis, histone again enters the nucleus, and then it combined with DNA, wraps the DNA around it to form nucleosomes and then chromatin. Now there is some confusion among many students about chromatin versus chromosome. So chromatin, it is a loose structure. Even if it is tight, it is tightly wrapped around this spool known as histone, but still it is way looser than the chromosome. So the chromatin structure, which is the DNA wrapped around histone, it exists during the normal functioning of normal cell activity. But when cell divides, during cell division, this structure, DNA, it pack itself tightly. Further packing is there, tight packaging is there, and that tight packaging or tight pack, it is known as chromosome. So again, both are same. It's just difference of degree of packing. Degree of packing. So even though the chromatin itself are the DNA that is wrapped around histone, but they are still loosely packed, and such structure can exist during normal cell activity, but during cell division a tightly packed structure is needed, and that's why DNA, it packs itself further, and that tightly packed and organized structure is known as chromosome. That's the only difference. Now the protein synthesis, which is making protein from genes. So proteins are essential for all body function, digestion, muscle movement, immune defense, and many other functions. Now the process. So DNA holds the instruction, but DNA cannot move out of nucleus. So this work is done by mRNA, which copies the message via a process called transcription and travel outside the nucleus into the cytoplasm. And then in the cytoplasm, there is ribosome, the protein making factory. Ribosome, it reads the message, and that message in the form of three letter codes called codons. Then each codon, it tells the ribosome which amino acid to add next. So here the half of the message, it is brought in by mRNA. Then other half message, other anticodon, it is provided by ribosome with the help of transfer RNA, which brings the right amino acid to the ribosome. So you get the picture here. This one is the conveyor belt. This half of the message, half code, the codon, it is brought in by mRNA. Then the anticodon, it is provided by ribosome via tRNA, transfer RNA, and this completes one block of amino acid. Then this space, it is filled by a peptide bond. Then this sequence moves further, and इस तरह से एक chain create की जाती है. That chain of amino acid is known as protein. Finally, when all the amino acids are joined, the chain folds in a specific shape, and then the folded chain, it becomes a functional protein. So in short, DNA has the instruction, then the instructions are copied into mRNA by transcription. mRNA travels to the ribosome. Ribosome reads the mRNA, the codon brought in by mRNA, and provide the adjacent anticodon with the help of tRNA and builds the amino acid. Then that amino acid chain, it is glued in by peptide bond, and that's how the whole peptide chain, polypeptide chain, is formed, and that polypeptide chain is known as protein. Now amino acids.
तो अभी तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि अमीनो एसिड्स आर स्मॉल मॉलिक्यूल दैट जॉइन टुगेदर टू फॉर्म प्रोटीन. A chain of amino acid is equal to proteins, and you can assume amino acid as a bead on a necklace. So there are 20 different amino acids used in the body, and the structure: first there is an amine group, NH2, a carboxyl group, then a central carbon atom, C, a hydrogen atom, H, and a side chain group that is unique to each amino acids. Now, how they are formed? So they are made in two ways. First, they are biosynthesized, which means they are produced by individual body using simple molecule like glucose and ammonia. यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है कि हमारी बॉडी जो है इट कैन मेक एलेनिन by converting a part of glucose and adding an amino group. So that's way simple amino acid alanine can be made. Where the second way it is made by plant and bacteria, which can make all 20 amino acids from using sunlight, water, and minerals, same as photosynthesis. Now let's have a look at cell division in human cells. So cell division is the process in which human cell divide to produce new cells. And the cell division, it is an ever going ongoing activity which is necessary for bodies to grow itself, to repair the damaged tissue and produce reproductive cells for the next generation. Types of cell division. First, mitosis. So mitosis is for somatic cells and it is usually for growth and repair. ये जो cells हैं जो body cells या somatic cells हैं, they can repair themselves. फिर जो somatic cells हैं, which means somatic cells को body cells भी बोल सकते हैं. Simple explanation यही है कि every cell other than the sex cells, other than sperm and ovum, are known as somatic cells. Where mitosis is the process of division of those somatic cells, those body cells. यानी आपके हाथ की, आपके जो internal organs की, जो आपके other tissues की, इन सब की जो repairing cells हैं, all are somatic cells. Then उसकी repairing के लिए जो process होती है, the process of cell division, it is known as mitosis. Then mitosis के अंदर एक cell के division में दो डॉटर सेल्स होती है. ये पेरेंट सेल, ये डॉटर सेल्स, एंड जो डॉटर सेल्स हैं दे विल हैव इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एंड दैट्स व्हाई दे आर नोन एज डिप्लॉयड. एंड यहाँ पे डिप्लॉयडी इसका फिनोमिना ये है कि जो एनिमल किंगडम में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, स्पेशली ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, so यहाँ पे every offspring, it derives one copy each from one of its parents. So like ये person है, this one is going to derive one copy from mother, one from father, and that's why every organism has two copies of any particular gene, and that's why each cell is called a diploid. यहाँ पे जो number of chromosomes हैं, they are double. यूजुअली 23 होने चाहिए बट 46 है क्योंकि 23 ईच फ्रॉम टू पेरेंट्स. देन माइटोसिस is it helps in maintaining genetic consistency and it is used for growth, for tissue repair, and for asexual reproduction. Now comes the important parameter for evolution, that is meiosis. So meiosis is the gamete making cell division. So first, it occurs only in the gonads. So gonads are the gamete holding organs. So those organs are tested in males and ovaries in females. Male testes से sperm बनता है and female ovaries से ovum. Now meiosis के अंदर it produces 4 daughter cells and each genetically unique. So this is quite different from the 2 daughter cells that are produced in mitosis. So एक पर्टिकुलर सेल, एक सेक्स सेल के पेरेंट सेल से 4 डॉटर सेल्स rather than 2. Then the second difference between mitosis and meiosis कि यहाँ पे
हर एक डॉटर सेल्स जो है उनके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम इट विल बी हाफ, दे विल बी द यूजुअल हैप्लॉइड वन, 23 क्रोमोसोम्स ही होंगे. सो हर एक डॉटर विल हैव 23 chromosomes, which is different from mitosis, which has 46 chromosome in each daughter cells. So ये एक second difference है. Then meiosis also ensures that after fertilization, the offspring gets the correct number of chromosomes. So एक particular daughter cell है, सॉरी एक parent cell है, उसके 4 alternatives हैं, 4 options हैं, each with 23 chromosomes, and then यही कॉम्बिनेशन ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, सेम जो सेल्यूलर स्ट्रक्चर, सेम सेल्यूलर एक्टिविटी जो है वो दोनों पेरेंट्स में है, मदर एंड फादर दोनों में, और सिमिलर उनके भी सेम जो मियोसिस के अंदर जो डिवीजन है 4 डॉटर सेल्स एंड ईच विद 23. सो इस तरह से नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है. देन पॉसिबिलिटीज के बाद देयर इज क्रॉसिंग ओवर एंड इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, दो चीजें विच इंट्रोड्यूसेस जेनेटिक वेरिएशंस. सो फर्टिलाइजेशन के दौरान जो इन सब ऑप्शंस में से जो 46 काउंट जो है, 46 क्रोमोसोम दैट द ऑफस्प्रिंग शुड हैव, दैट द फीटस शुड हैव, ये जो है इट इज ब्रॉट बाय दीज टू थिंग्स. फर्स्ट क्रॉसिंग ओवर. क्रॉसिंग ओवर में जो कंसेप्शन के दौरान दोनों के जो जीन्स हैं, मदर एंड फादर दोनों के जो जीन्स हैं, उनमें से जो बेस्ट जीन्स हैं अकॉर्डिंग विच इज कंसिस्टेंटली बेटर ऑफ इन पर्टिकुलर सिचुएशन, वो जीन या ट्रेड जो है इट इज चोजन. देन फिर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इट्स लाइक रैंडम असॉर्टमेंट, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं पॉसिबिलिटीज बहुत सारी डॉटर सेल्स में एंड मेल सेल्स में. एंड सिंपल आप इसको इस तरह से भी देखेंगे, जो मदर एंड फादर है एंड दे आर ट्राइंग टू प्रोड्यूस अ चाइल्ड. तो इस सिचुएशन में भी मदर के पास 46 हैं, फादर के पास भी 46 हैं. यहाँ पे जो चाइल्ड है इट कैन ओनली हैव 46. सो ऐसे में कौन से जीन्स जो हैं वो बेटर हैं, उनके पास भी अपने अपने पेरेंट्स से बेस्ट ऑफ जीन्स हैं. और इसी तरह से जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, रैंडम असॉर्टमेंट एंड क्रॉसिंग ओवर, इट डिराइव्स, इट सेलेक्ट्स द बेस्ट ऑफ द जीन्स. यहाँ पे बेस्ट ऑफ द जीन्स जो है वो अवेलेबिलिटी पे डिपेंड है कि जो अवेलेबल है उनमें से फिजिकल कंसिस्टेंसी, ओवरऑल फिटनेस, ओवरऑल रिप्रोडक्टिव और सर्वाइवल फिटनेस इंश्योर करने के लिए जो बेस्ट कॉम्बो डिराइव हो सकता है, बेस्ट कॉम्बो इनहेरिट हो सकता है, वो डिपेंड करता है इन दोनों फंक्शंस पे, क्रॉसिंग ओवर एंड इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. और ये चीज जो है यहाँ पे डिटेल में नहीं, क्योंकि जो नेक्स्ट जो टॉपिक है इसी यूनिट 3 का विच इज अबाउट सेल साइकिल, उसमें और डिटेल में हम बात कर लेंगे. सो सेल साइकिल यहाँ पे मैंने ब्रीफ में दिया है 6 पॉइंट्स ओनली, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक जो है वो पूरा एक स्पेसिफिक टॉपिक है, तो उस पर भी एक लॉन्ग लेक्चर हो जाएगा. तो जितने भी छोटी मोटी चीजें हैं दे विल बी इंक्लूडेड इन दैट. सो सेल साइकिल इज the entire cycle of cell division. So first, the mitosis, it has 4 stages: prophase, metaphase, anaphase, and telophase, followed by cytokinesis, which splits the cytoplasm. Then meiosis 1 is there, which reduces the chromosome number by half and introduce genetic variation by crossing over. So यहाँ पे जो daughter cells में inheritance बताया था. Then meiosis 2, it separates the chromatin of each chromosome. Then finally, meiosis, it produces sperm or egg cells with the half DNA and it is ready for fertilization. So this is the whole structure, और इसके बारे में डिटेल जो है वो नेक्स्ट टॉपिक सेल साइकिल में हो जाएगा. Now the key terms: first, DNA replication. So DNA replication is the process in which cell makes an exact copy of its DNA before it divides. क्योंकि सेल डिवीजन की बात कर रहे हैं या सेल साइकिल की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट सेल डिवीजन, हाउ सेल रेप्लिकेट्स इटसेल्फ. एक पेरेंट सेल से
डॉटर सेल्स, 2 डॉटर सेल्स हैं इन माइटोसिस एंड 4 डॉटर सेल्स इन मियोसिस। इन इन दोनों प्रोसेस में, माइटोसिस या मियोसिस, दोनों में द प्रिजर्वेशन ऑफ एग्जैक्ट copy of DNA is necessary. So that uh, you know preservation of DNA, it is facilitated by this process known as DNA replication. And DNA replication, which is the exact copying of the cell DNA, cellular DNA, it occurs in the S phase, which is synthesis phase of interphase. So the S phase or synthesis phase, it is the period when cell is about to divide. Cell is preparing for divide. And if DNA is not replicated accurately, then many vital genetic information may be missed. Then cytoplasm. So cytoplasm is the extracellular semi-fluid jelly-like substance inside the cell and outside the nucleus. And it contains organelle like mitochondria, ribosome, जो अभी आपने देख ही लिया है कि this cell ये nucleus है, and this extracellular matrix, it is known as cytoplasm. और उसी में बहुत सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्जी बॉडीज वगैरह। फिर साइटोकाइनेसिस की बात करते हैं। साइटोकाइनेसिस भी सेल साइकिल में देखेंगे, विच इज द फाइनल स्टेज ऑफ सेल डिवीजन। उसमें द साइटोप्लाज्म, दिस फ्लूइड, इट इज स्प्लिट बिटवीन द 2 न्यू सेल्स। एक पर्टिकुलर सेल है, इसी से 2 डॉटर सेल्स बनानी है, डीएनए रेप्लिकेट हो गया, दैट्स ओके। Now this matrix, this fluid, it must be halved. So ये जो इसका halving of या इसका जो division है, it is known as cytokinesis. फिर ploidy की बात करते हैं। Ploidy means number of chromosome. So when the chromosome are multiplied by 2, when the set of chromosome are in binary terms, twice the number, they are known as diploid. So ज्यादातर जो ऑर्गेनिजम्स हैं एनिमल किंगडम के, दे हैव 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम, 1 सेट फ्रॉम ईच पेरेंट। सो हमारे अंदर भी 46 क्रोमोसोम हैं इन 23 पेयर्स, एंड जितने भी सोमैटिक या बॉडी सेल्स हैं, दे आर डिप्लॉयड। देन हैप्लॉयड मींस ओनली 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम। सो इन ह्यूमन हैप्लॉयड सेल्स, दे हैव 23 क्रोमोसोम इन द गैमेट सेल्स, द स्पर्म एंड द एग सेल्स. And next comes chromatids. So chromatid is nothing but 1/2 of a chromosome. The chromosome structure है, it is usually like X. इस तरह से ये structure होती है, and they are joined by a centromere. And it is the position of this binder, the centromere, which align with the length of chromosomes. तो यहाँ पे मैंने एक सिंपल स्ट्रक्चर ली है, सो यू कैन ऑल्सो एज्यूम दिस स्ट्रक्चर। सो जो एक हाफ है, इट इज नोन एज क्रोमेटिड, एंड दैट्स व्हाई दोनों जो है, दे आर नोन एज सिस्टर क्रोमेटिड्स। देन सेंट्रोमियर इज द बाइंडर इन द रीजन वेयर 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स आर जॉइंड टुगेदर। सेम यहाँ पे एक चीज है, दिस इज सेंट्रोमियर, एंड these 2 sister chromatids, 1/2 each, they are joined. And you can also assume it as this shape, जैसे assume करना चाहें, ये वाली. And centromere, the region where chromatids are joined together, is also the attachment point for spindle fibers. And spindle fibers, they are responsible as important activity during cell division to pull the chromatids apart. क्योंकि सेल डिवीजन के दौरान जो डिवीजन होता है सेल का, उसमें क्रोमोसोम डिवीजन भी होता है। सो ऐसे में क्रोमेटिड्स को अलग करना जरूरी है। फिर देन कम्स न्यूक्लियस। सो न्यूक्लियस इज द डेंस स्ट्रक्चर इनसाइड द न्यूक्लियस व्हिच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग राइबोसोम। एंड राइबोसोम आपको पता है, दे आर द प्रोटीन मेकिंग फैक्ट्री। Then finally spindle fiber. So spindle fiber are tiny thread-like protein structure that are formed by centriole in all animal cells. So they have the important function that they separate the chromosome during cell division.
And if the chromosome do not separate during cell division, this may lead to genetic disorder. So they have the important function of pulling chromosome apart. And कुछ चीजें जो यहाँ पे छूट जाए वो सब सेल साइकिल में आ जाएगी. ना हमारे मेथड्स की तरफ बढ़ते हैं. Cytogenetics. So cytogenetics is the branch of genetics that focuses on chromosomes, the behavior, structure, and function of chromosome. And literally, cytogenetics, it is made up of two words. Cyto means cell, and genetics refers to the study of genes. So cytogenetics is the study of genes within cells. So how this works? First, cells are collected from various sources such as blood, bone marrow, amniotic fluid, and then these cells, the collected cells, they are grown in a laboratory in a nutrient-rich media. Then scientists, they wait till mitosis is achieved, mitosis, cell division, and scientists wait till the stage because mitosis के दौरान ही chromosomes are clearly visible और mitosis के दौरान ही karyotyping होता है. फिर the special chemical called colchicine is added at the condensation stage. Condensation means chromosome they have condensed themselves at metaphase and they are easy to observe. Then the cells, they are dyed there, stained or dyed, and फिर they the dyed cell, they are studied under high powered microscope. और डाइम की वजह से, डाई करने की वजह से या जो कलर स्टेन है उनकी वजह से क्रोमोसोम्स जो है they become easily visible and then they are examined. So again, a simple structure here. First, cells are collected, various sources are there. ब्लड से हो सकता है, बोन मैरो से, एमनियोटिक फ्लूइड से हो सकता है, टिश्यू से, स्किन से हो सकता है. देन द सेल्स जो है दे आर ग्रोन इन अ लेबोरेटरी इन अ न्यूट्रिएंट रिच मीडियम. फिर द माइटोसिस, जब तक माइटोसिस होता है उस टाइम तक साइंटिस्ट वेट करते हैं क्योंकि माइटोसिस में क्रोमोसोम्स आर इजीली विजिबल. देन केमिकल डाई कोल्चिसिन इट इज एडेड क्योंकि उस क्रोमोसोम्स एट द कंडेंसेशन स्टेज नीड टू बी स्टॉप क्योंकि उसी टाइम पे उनको वो विजिबल होते हैं. फिर उन पे डाई करके, उनको स्टेन, कलर स्टेन करके दे आर स्टडीड अंडर अ माइक्रोस्कोप. फिर उसके बाद जो माइक्रोस्कोपिक स्टडी है उसमें साइंटिस्ट टेक फोटोग्राफ्स ऑफ द क्रोमोसोम एंड अरेंज देम इन pairs from 1 to 22 for autosomes and finally sex chromosome X and Y. So this placement, this arrangement of chromosome in number in this particular sequence, it is known as karyotype. So this is the whole procedure of cytogenetics. Now the key techniques used in cytogenetics: first, karyotyping, which is organization and analysis of chromosome under high microscope. Then this help in detect abnormality in numerical or structural chromosomal abnormalities, जो एक टॉपिक है आप में उसमें बताऊंगा. सो यहाँ पे जो abnormality है in number and structure, उसमें यह है कि हर क्रोमोसोम की एक पर्टिकुलर साइज एंड शेप होती है एंड नंबर भी होता है. सो फर्स्ट नंबर की बात करते हैं तो 46 क्रोमोसोम होने चाहिए. अगर उससे ज्यादा या कम है, लाइक टर्नर सिंड्रोम 45X हो, या तो दूसरे सिंड्रोम्स की बात कर लेते हैं, क्लिनफेल्टर सिंड्रोम की बात कर लेते हैं, 47 क्रोमोसोम्स आते हैं. सो दिस इज न्यूमेरिकल अबनॉर्मलिटी. सो ये भी कैरियोटाइप से पता चल जाता है. फिर स्ट्रक्चर की बात करते हैं, जो एक पर्टिकुलर साइज होती है हर एक क्रोमोसोम की, और उसमें भी अगर मिसमैच है तो भी पता चल जाता है. सो दिस कैरियोटाइपिंग इट इज यूजफुल इन डायग्नोस्टिक कंडीशंस लाइक डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, ये दोनों बताएं, जो टर्नर एंड क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम. फिर second method is second technique is the banding technique. This technique is one step ahead of the karyotyping क्योंकि karyotyping से numerical and structural abnormalities पता चल जाती है. But if अगर उसमें deletions हैं या translocations हैं, उसके लिए we need further staining. So banding technique is a special staining coloring technique that highlight patterns. So this
banding known as G banding, chemso banding, which is commonly used, and it produces a series of light and dark bands which help spot structural abnormalities like deletions, duplications, translocation. अगर chromosome है delete हो गया है, if they are duplicate or if they have translocated somewhere else, 5 नंबर का 10 नंबर पे आ गया, इस तरह से. Then the third technique is fish fluorescence in situ hybridization. So this technique, it uses fluorescent DNA probes that bind to specific chromosomal regions. So इसमें क्या होता है? The scientists, they make small pieces of DNA called probes. Those artificially created DNA probes, DNA sequence, वो create की जाती है, and usually ये वही डीएनए सीक्वेंसेस होती है जो स्पेसिफिक टारगेट की सीक्वेंस से मैच करती है. देन उन जो प्रोब्स है, जो लैब क्रिएटेड डीएनए सीक्वेंसेस है, दे आर डाइड, दे आर स्टेन, एंड ये जो फ्लोरोसेंट डाई है, उसके बाद ये डीएनए प्रोब जो है, इट इज मेड टू अटैच विद द टारगेट सीक्वेंस. फिर जब ये डीएनए प्रोब इस टारगेट सीक्वेंस पे मैच हो जाता है, व्हेन इट बाइंड्स टू दैट सीक्वेंस, दैट स्पेसिफिक क्रोमोसोमल रीजन, उसके बाद उस सीक्वेंस को एक स्पेशल माइक्रोस्कोप के अंदर देखा जाता है. एंड this method, this probing, it lets scientists see whether certain genes are located, if there are any changes, if something is missing, and that's how this whole DNA probe works. And again, a simple overview, क्योंकि I guess ये कुछ confusing हो सकता है कुछ लोगों के लिए. So DNA probe, they are lab cultured DNA sequences. So scientists जो है पहले देख लेते हैं, जो भी उनकी टारगेट क्रोमोसोम सिचुएशन होती, क्रोमोसोम रीजन होता है, उसकी वो सीक्वेंस देख लेते हैं कि ये पर्टिकुलर सीक्वेंस है, लाइक लेट्स से 11 to 23, ये एक सीक्वेंस जो है उनमें उनको प्रॉब्लम नजर आ रही है. सो वो लैब के अंदर एक डीएनए सीक्वेंस प्रिपेयर करते हैं, सेम 11 to 23, विच इज नोन एज डीएनए प्रोब. नाउ जो लैब ग्रोन सीक्वेंस है, it is dyed with fluorescent colors, and that's why it is known as fluorescence in situ hybridization. फिर ये DNA probe जो है, that is dyed with fluorescence, उसको it is sent to the target sequence. वहां पे it locks in, binds. फिर DNA पे देखने पे, because it is already dyed, already stained, so DNA में DNA क्या, माइक्रोस्कोप में it glows. और इस नेचर की वजह से साइंटिस्ट जो है, दे कैन ऑब्जर्व कि इफ समथिंग इज मिसिंग, इफ समथिंग इज ट्रांसलोकेटेड, इफ देयर आर सम अदर माइनर चेंजेस हियर एंड देयर. एंड दिस मेथड इज क्वाइट एन अपग्रेड विद द अर्लियर मेथड्स, क्योंकि ट्रेडिशनल कैरियोटाइपिंग या बैंडिंग टेक्निक में इसमें सिर्फ ब्रॉडर लेवल पे आप चेंजेस देख सकते हैं. इफ क्रोमोसोम आर प्रेजेंट, इफ दे आर ट्रांसलोकेटेड, इफ समथिंग इज डिलीटेड, इफ the size has been reduced, if numbers are more or less. But small changes, they are detected by this fluorescent DNA dye. Now, the next technique is CGH, comparative genome hybridization. So, इस method में same, यहाँ पे they use a fluorescent DNA probe. यहाँ पे CGH में they compare the patient's DNA to a normal DNA. So, दोनों में ही एक चीज कॉमन है, दैट फर्स्ट दे नो द सीक्वेंस एंड देन अनदर सीक्वेंस इज ब्रॉट इन फॉर कंपैरिजन और फॉर डिटेक्शन. सो ये वाला सिंपल है, पेशेंट का डीएनए है, उसको एक नॉर्मल डीएनए से कंपेयर करते हैं, तो उसमें जो भी प्रॉब्लम्स होती है, माइक्रो डिलीशंस या माइक्रो डुप्लीकेशंस हैं, वो पता चल जाते हैं. नाउ द एप्लीकेशन ऑफ साइटोजेनेटिक्स, फर्स्ट it identifies chromosomal disorders. जो भी आप देख चुके हैं कि क्रोमोसोम्स में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, डिलीशन, चाहे माइक्रो लेवल पे है या मैक्रो लेवल पे, सारे डिसऑर्डर्स पता हो जाते हैं. देन दिस टेक्निक इज आल्सो यूज्ड इन एमनियोसिंथेसिस एंड कोरियोनिक विल्स सैंपलिंग. सो जो एमनियोसिंथेसिस है, एक मेडिकल टेस्ट है विच इज डन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टू कलेक्ट अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड जिसके अंदर फीटस रहता है इनसाइड द यूट्रस.
सो उस फ्लूइड में, एमनियोटिक फ्लूइड में, दे आर फीटल सेल्स, और उन फीटल सेल्स को देन उनको लेके उनमें जो क्रोमोसोमल एनालिसिस किया जाता है, ताकि जितने भी जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं सिमिलर यहाँ पे, वो पता चल जाए, whether structural abnormalities are there, whether numerical abnormalities are there, whether duplications or deletions are there, translocations are there. फिर साइटोजेनेटिक्स सेकंड जो है, कोरियोनिक विलिस, इसमें किया जाता है. सो कोरियोनिक विलिस जो है, दे आर लाइक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस इनसाइड द यूट्रस, जो जो फीटल मेम्ब्रेन है, फीटस की मेम्ब्रेन से दे ग्रो इनटू द यूट्राइन वॉल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. सो जो these finger like projections हैं, you can assume is it's a simple structure. ये यूट्रस है, यूट्रस के अंदर ये जो मैट्रिक्स है, जो फ्लूइड है, एमनियोटिक फ्लूइड, और ये फीटस की स्ट्रक्चर है. अब फीटस का जो जो एनवायरमेंट है, उससे जो प्रोजेक्शंस हैं, दोज प्रोजेक्शन दे आर नोन एज कोरियोनिक विली. एंड ये इन प्रोजेक्शन से देयर इज एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट बिटवीन द यूट्रस एंड द मदर. एंड वन मोर थिंग इज देयर कि मैंने यहाँ पे एक जो जो फीटस का डायग्राम ड्रॉ किया है. तो ये एक, इट इज नॉट यूजुअली द डायग्राम टू स्टडी कोरियोनिक विली, क्योंकि जो these projections जो होते हैं, they are quite, they belong to the phase of early pregnancy, जिसमें जो फीटस की साइज जो होती है बहुत छोटी होती है, इस शेप में फीटस नहीं होता है. सो बट स्टिल उस जो अर्ली फीटस है उसको भी तो न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन चाहिए. सो दीज फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दे हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ बोथ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट. लेकिन ये जो अगर सेकेंड और या थर्ड ट्राइमेस्टर की बात करें तो उसका केस नहीं है. इसलिए जो लेटर प्रेगनेंसीज जो हैं उनके अंदर एमनियोसेंटेसिस यूज किया जाता है टू गेट द बेबीज डीएनए. लेकिन कोरियोनिक विली ये अर्ली प्रेगनेंसी में है. और ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, अगेन जिस तरह जो एमनियोटिक फ्लूइड में फीटल डीएनए होता है, उसी तरह से ये जो कोरियोनिक विली है, दे ऑल्सो कंटेन्स बेबीज जेनेटिक मटेरियल. फिर अगेन किसी का सैंपल लेके भी सेम क्रोमोसोमल एनालिसिस किया जाता है, ताकि जो कोई अबनॉर्मलिटी हो तो सामने आ जाए. एंड इसीलिए मैंने कहा कि इट इज क्वाइट अ लॉन्ग लेक्चर, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं, दे हैव बीन पुट टुगेदर, सच इंपॉर्टेंट चीजें जो मिस भी नहीं कर सकते. जैसे यहाँ पे डाउन सिंड्रोम है, डिसऑर्डर्स हैं. अब इफ आई वांट टू, इफ आई सिंपली लुक एट ऑल दीज टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजी, माय माइंड गोज लाइक सबको समझाना चाहिए. बट इफ आई goes on explaining each of them, I believe that lecture is going to stretch up to 3 or 4 hours, और वो possible नहीं है. We have a limited time frame, so that's why I try to maintain the rhythm. फिर the next application of cytogenetics is in identifying the causes of infertility and recurrent miscarriages. So again the chromosomal issues are found out, और chromosomes कैसे study होता है ये आपने देख लिया. Then it has also application in evolutionary anthropology by studying the evolutionary relationship of humans with other primates. So यहाँ पे example दे रखा है, the fusion of true ancestral ape chromosome, it led to the second chromosome in human karyotype. जो sequence है, karyotype sequence में जो second number जो chromosome है, it has been derived from the fusion of true ancestral ape chromosome. और ये पता चला है by this cross analysis. For the example of cytogenetic disorders, so first Down syndrome, which is known as trisomy 21. Trisomy 21 इसका मतलब होता है कि 21 पोजीशन पे 3 क्रोमोसोम्स हैं, जबकि होने चाहिए 2. सो अल्टीमेटली जो टोटल काउंट है वो 47 हो जाता है, which is a case of numerical abnormality. And this numerical abnormality can be found out by karyotype. Karyotype is the staining of chromosome during mitosis. Then they are studied under microscope, high powered microscope, where microscope में उस stage पे, उस metaphase पे
जो भी कंडेंस स्ट्रक्चर मिलती है उन सब का फोटो ले लेते हैं, देन दे आर अरेंज इन अ सीक्वेंस वन बाय वन. सो दैट्स हाउ कैरियोटाइप इज डन. और उसमें उसी कैरियोटाइप में पता चला कि जो 21 पोजीशन पे है उस पे ट्राइसोमी 3 क्रोमोसोम्स है. Then the similar application in Turner syndrome, which is 45X. तो यहाँ पे 1X chromosome it is missing. Then the Cre-du-Chat syndrome, which is deletion of part 5 or deletion of a part of chromosome number 5, and this leads to children having a high pitched cry that resemble that of a that of a cat. Then the Philadelphia chromosome, so it is found in patient with chronic myeloid leukemia, the blood cancer, and this is a case of translocation between 9 and 22. And translocations they can be found with G banding और फिश टेक्निक. सो ये एप्लीकेशंस हैं. सो आगे बढ़ते हैं मेंडेलियन जेनेटिक्स पे. तो मेंडेलियन जेनेटिक्स इट एक्सप्लेन how physical traits are passed from one generation to the next, and this method is based on the experiment of Gregor Mendel, who is also known as the father of genetics. And he worked with the pea plants and discovered predictable patterns of inheritance, which later were called the Mendelian laws. So the key principle of Mendelian genetics, first is the law of segregation. So every person, they have 2 copies of each gene, and when we take 2 copies, we call them alleles. So alleles are nothing but 2 variants of particular gene, because each copy is derived from one parent. So that's why we have 2 copies. Then during the formation of egg or sperm, during the spermatogenesis, during during meiosis, these 2 alleles they separate or segregate. वो भी सही है. Then a parent passes only one of the 2 alleles to the child. So this again is a classical case of meiosis, but this inheritance is derived from the perspective of parent. Usually जो meiosis study करते हैं, we study it from the perspective of the offspring, but right now we are taking the account of parent as a lens, as a visualization lens for how traits are going to traits are going to pass down from parent to their offspring. So यहाँ पे any parent like a father, so father himself will have 2 copies, 2 genes from one of his own parents. Let's say यहाँ पे 2 copies हैं father के gene में. अब when this particular individual, this parent, उसमें उसके जो body cells है, जो sex cells हैं, during the formation, during the spermatogenesis, यहाँ पे ये दोनों जो हैं, ये दोनों alleles हैं, they are going to separate themselves again. जिस तरह से बिफोर कंसेप्शन दे वर सेपरेट, उसके खुद के पेरेंट्स के जो जीन्स जो थे कंसेप्शन के पहले सेपरेट थे, वैसे ही स्पर्मेटोजेनेसिस में दोनों जो है वो सेपरेट हो जाएंगे. बट देयर विल बी अ लॉट ऑफ डिफरेंस हियर. जो पेरेंट्स का जेनेटिक मेकअप जो है वो अलग था, जो फादर का जेनेटिक मेकअप है वो अलग है. बट आई एम जस्ट प्रोवाइडिंग एन एनालॉजी कि किस तरह से बिफोर कंसेप्शन दिस थिंग एग्जिस्टेड इन दिस वे, अ सेपरेट segregation was there, and similar segregation will be there during the spermatogenesis or even the ovum formation. So यहाँ पे जो गैमेट फॉर्मेशन है उसमें जो भी alleles हैं किसी भी particular gene के, they will segregate, they will separate. फिर during fertilization इनमें से कोई एक ही जीन जो है वो ऑफस्प्रिंग में जाएगा, और वो हमने अभी भी देखा क्रॉसिंग ओवर एंड इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में कि जो ये कह सकते हैं सेक्स सेल्स जो हैं दे आर यूजुअली हैप्लॉइड, मींस ओनली हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम. और वो इसी तरह से होता है कि सारे जो जीन्स हैं सारे एलील्स जो हैं दे आर गोइंग टू सेग्रीगेट देमसेल्फ. नाउ एन एग्जांपल इज देयर दैट इफ a father has one allele for brown and one for blue eye, derived both from his own parents,
लेकिन इन दोनों में से कोई एक ही ट्रेट जो है विल बी पास टू ईच चाइल्ड, नॉट बोथ। उसका जो जेनेटिक मेकअप है इट विल नॉट बी कॉपीड डिटो, इट विल नॉट बी कॉपीड और इनहेरिटेड इंटैक्ट टू द ऑफस्प्रिंग जनरेशन। क्योंकि ऐसा होगा तो फादर ऑलरेडी हैज 46, मदर ऑलरेडी हैज 46, नाउ द चाइल्ड इट कैन हैव ओनली 46। सो यहाँ पे the thing that makes sense numerically, mathematically, कि 23 फादर से आएंगे 23 मदर से आएंगे, लेकिन कौन से 23 फादर से होंगे कौन से 23 मदर से होंगे, इट हैज अनदर स्टोरी, इट हैज अनदर मैकेनिज्म जो हम मेंडेलियन जेनेटिक्स में और आगे मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में देखेंगे। Then comes the second principle of Mendelian genetics, that is law of independent assortment, independent or random assortment. So here it means that different traits like human के अंदर बहुत सारे genes हैं and all of these genes they inherit independently of each other. Means जो particular कोई एक gene है for height, so the inheritance of height for tallness will not affect the chances of inheriting a gene for blue eye. Means, in other way, the gene for eye, the gene for health, the gene for hair, the gene for teeth, and gene for height, all of them they exist independently. और इनमें से किसी भी एक का inheritance, the gene for bone health, it will be independent of the gene for the skin tone. So ये इस मैकेनिज्म में जीन्स आर नॉट लिंक, कि एक पर्टिकुलर अगर जीन इनहेरिट हो रहा है तो इट विल नॉट बी डिपेंडेंट ऑन द इनहेरिटेंस ऑफ एनी अदर जीन। फिर कम्स द लॉ ऑफ डोमिनेंस। ये वाला आपको आई गेस समझ में आ गया, आई डोंट नो, सिंपल, ऑल ऑफ द जीन्स दे आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर। कि अगर आई कलर इनहेरिट हुआ नहीं हुआ उससे हाइट का कोई कनेक्शन नहीं है, हाइट वाला इनहेरिट होगा, हाइट वाला जीन जो है इट विल सेग्रीगेट इटसेल्फ एंड इट विल डिवाइड इटसेल्फ। वो उसका जो यूजुअल प्रोसीजर है वो फॉलो होगा इनहेरिटेंस में, दिस विल गो अहेड। उसका फिर किसी और अदर जीन से कोई लिंकेज नहीं है, प्रोवाइडेड दे आर ऑन डिफरेंट लोकस। क्योंकि बहुत सारे जीन्स जो होते हैं वो दे आर ऑन द सेम क्रोमोसोम, ऐसे में यहाँ पे इंटरलिंकेजेस जो होते हैं सिंगल लोकस वाले उनमें प्रॉब्लम होती है। फिर बात करते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। सो लॉ ऑफ डोमिनेंस में ये है कि अब हमने देख लिया कि 46 मदर से आ रहे हैं, 46 फादर से आ रहे हैं, और इसमें सिर्फ 23 फादर से आ सकते हैं, 23 मदर से आ सकते हैं, तो बेस्ट कौन सा है? सो द बेस्ट वन इज द डोमिनेंट वन। सो यहाँ पे स्ट्रक्चर ये है कि हर एक जीन जो है इट हैज टू कॉपीज, वन फ्रॉम ईच पेरेंट। नाउ जो अलील्स हैं दे एग्जिस्ट इन सर्टेन वेराइटी, लाइक heterogeneous dominant, then homozygous dominant, and then heterozygous recessive. Now what these terms are? So first, heterozygous dominant, it means दो डिफरेंट वेराइटीज हैं जीन्स की वो एग्जिस्ट करती है, वन डोमिनेंट लाइक कैपिटल टी, वन स्मॉल टी, दोनों टुगेदर। सो दिस allele it is heterozygous क्योंकि दोनों अलग अलग वेराइटी है, बट इट इज स्टिल डोमिनेंट क्योंकि अगर एक भी डोमिनेंट अगर allele है सो दैट डोमिनेंट विल एक्सप्रेस। फिर होमोजाइगस डोमिनेंट, इसमें दोनों जो है डोमिनेंट है, दोनों allele डोमिनेंट है और जो एक्सप्रेशन है वो भी डोमिनेंस का होता है। फिर हेट्रोजाइगस होमोजाइगस रिसेसिव, इट मींस दोनों ही जो है वो रिसेसिव है। सो यहाँ पे दोनों ही रिसेसिव हैं तो कोई ऑल्टरनेटिव है नहीं, तो सिर्फ रिसेसिव एक्सप्रेस होगा। सो यहाँ पे मैंने दो चीज बता दी, डोमिनेंट एंड रिसेसिव। सो डोमिनेंट एंड रिसेसिव का कंसेप्ट ये है, जो जीन्स होते हैं certain genes are quite strong, dominant, they are chosen by natural selection, they are favorable, they are adaptable, so those are known as dominant gene.
and they are expressed in capital letters. Like if uh, you have a good height, so that is a gene for tallness, gene for height. So T is the dominant one. Then you have a short height, then small t is there, which is a recessive gene. और ये मैंने एक सिंपल एग्जांपल दिया है, which doesn't you know doesn't much matter in survival. लेकिन बहुत सारे ऐसे जीन्स हैं जो पर्टिकुलर एनवायरमेंटल प्रेशर में दे प्ले अ क्रूशियल रोल इन सर्वाइवल, कि उसमें डोमिनेंट एंड रिसेसिव का होना ये काफी जरूरी है. बट सिंपल थिंग इज देयर कि सर्टेन जीन्स दे आर डोमिनेंट एंड सर्टेन आर रिसेसिव. फिर ये है कि हर एक जीन जो है ये डिप्लॉयड होता है, यानी एक एक पेरेंट से फ्रॉम ईच पेरेंट, इस तरह से जो दो एक साथ जीन्स रहेंगे नोन एज अलील्स, और दोनों इस फॉर्म में हो सकते हैं. सो अगर दोनों ही रिसेसिव हैं, then it will be known as homozygous recessive. If one dominant is there, if at least one dominant is there, it will express itself. So इस वाले केस में it will be known as heterozygous dominant. और यहाँ पे दोनों ही डोमिनेंट है, it will be known as homozygous dominant. और ये तीनों चीजें होती है, तीनों पैटर्न होता है जिसमें जो अलील्स जो है वो एग्जिस्ट कर सकते हैं. So dominant allele are those that mask the effect of another allele, which is called recessive. Or in other terms, dominant are those that help in survival of particular individual, that are adaptable, that are advantageous, and recessive are the less advantageous. So even if there is a one copy of dominant trait, it will express itself. And in that heterozygous situation in which one dominant is there and one recessive is there, still the dominant will express itself. अगर किसी इंडिविजुअल में एक टॉलनेस का जीन है और एक शॉर्टनेस का है, बट द इंडिविजुअल विल बी टॉल बिकॉज दिस डोमिनेंट ट्रेट विल एक्सप्रेस इटसेल्फ. लेकिन अगर दोनों ट्रेट जो हैं वो रिसेसिव हैं, तब सिर्फ रिसेसिव ही एक्सप्रेस होगा. अगर दोनों ही शॉर्ट के हैं तो देन इंडिविजुअल विल बी शॉर्ट. And that's how the law of dominance works. Now let's have a look at how Mendelian genetics works. और इसीलिए मैं अभी तक मैंने कहा था कि this is quite a long lecture. इसमें हर एक चीज जो है उसको देख के लगता है कि it needs explanation. It should be explained in detail. और सारी की सारी जो important principles हैं evolution के, genetics के सारे principle एक साथ डाल दिए. Mendelian genetics use Mendelian Genetics studies the inheritance patterns of traits across generations. The first such tool is pedigree chart, which is a family tree diagram. So here the square they represent males and circle it represents female. So a union will be represented in this way. फिर उनके offspring. So here this one is father, this one is mother, और उनके offspring like same ratio, a son, a daughter. फिर इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है. देन और उनके सिबलिंग्स भी हो गए वो सब. तो ये सब जो है दिस रिप्रेजेंटेशन इट इज नोन एज अ पेडिग्री डायग्राम. देन देयर इज वन मोर थिंग like same, this for male, this for female, and if someone is affected then this diagram will be this circle or square, they will be shaded. So shaded pictures, shaded symbols, they indicate affected individual. So इस तरह से this pedigree chart it helps determine whether a trait is dominant or recessive. Then they understand whether the inheritance it is via autosomal or X-linked. Then comes Punnett square, so which is a simple chart that predicts the possible genetic combination, and it works like this way. A simple chart will be created. So in similar way, here mother and father. Now
mother, she's let's say heterozygous dominant, one capital T, one small t, and father is also heterozygous dominant. तो अब उनके जो ऑफस्प्रिंग है, चिल्ड्रन है, फोर ऑफ देम, उनमें ये जो ट्रेड्स हैं वो किस तरह से इनहेरिट होंगे. सो द फर्स्ट वन, दिस वन, तो यहाँ पे द कॉम्बिनेशन टी एंड टी, फर्स्ट वन विल बी homozygous dominant, the second one will be heterozygous dominant, the third one will again be heterozygous dominant, and the fourth one will be homozygous recessive. So यहाँ पे आप देख सकते हैं कि if the parents, if they are heterozygous dominant for a particular gene, then uh, the three of their kids will be immune from it, will have the dominant gene and will have expression of the dominant gene. सिर्फ एक जो person है will be affected. Now the applications of Mendelian genetics. First, understand genetic disorders by studying the inheritance pattern, where the examples जैसे sickle cell anemia का है, that जो recessive होगा वही जो है वो will be carrying the lethal traits. Then cystic fibrosis, again the recessive one. Then Huntington's disease, a dominant one. So इनकी स्टडी से दोनों पेडिग्री एंड पनेट स्क्वायर दोनों से पता चल जाता है कि whether the child will be carrying certain genes. Then Mendelian genetics help the genetic counselor to provide information to the couples about possible risk that the offspring might be carrying, कि offspring के अंदर ये चीजें हो सकती है, क्योंकि सिमिलरली जब उनका जेनेटिक कॉम्बिनेशन उसके पास है ही है तो पनेट स्क्वायर तो काम आ ही सकता है. लेट्स से कोई भी एक लीथल कंडीशन है, एंड इफ दैट लीथल कंडीशन, सिकल सेल की बात करते हैं तो सिकल सेल इज रिसेसिव, is lethal in recessive form. If it is heterozygous, then it will not be lethal. So simply this one lethal, this one non-lethal. Now Punnett square से पता चल जाता है कि whether the couple is carrying such a gene और उनके जो children हैं उनमें कितनी possibility होती है. Again, mother and father, अब दोनों का genetic combination. Let's say mother, she is heterozygous, but father is recessive. Now combination देखेंगे तो first child will have the heterozygous inheritance, so it will be non-lethal. Second child again heterozygous, non-lethal, but the rest of the two kids, they will carry the recessive traits, homozygous recessive, and this will be lethal for them. So ये Punnett square से पता चल गया. And same pedigree analysis, उससे पता चल जाता है कि family tree में क्या है. So the difference between pedigree analysis and Punnett square is that जो pedigree analysis है, it help identifying the inheritance pattern across generations, multiple generation, कि कैसे derive हुआ. This particular union, अब उसके अंदर ये दो, like say two daughters आते हैं, फिर इस डॉटर का, इसकी यहाँ पे शादी हुई, इसकी यहाँ पे शादी हुई, फिर उनके और ऑफस्प्रिंग है, लाइक वन मेल हियर, वन डॉटर हियर. सो उससे पता चल जाता है कि लाइक अगर अफेक्टेड है शेडेड वन, फिर उससे इनहेरिटेंस पैटर्न जो है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा. लेट्स से दिस मदर, इफ शी इज अफेक्टेड, सो उसमें अगेन पूरी फैमिली में उस पर्टिकुलर जीन का इनहेरिटेंस डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा. Now the anthropology and human variation. So Mendelian genetics help explain the inheritance of physical traits and blood group variation and various diseases in isolated population. और ये सब चीजें जो हैं कैसे होती है यहाँ पे बताते हैं. फिर real world example of sickle cell anemia. So it is a recessive genetic disorder, and recessive means जो homozygous recessive होंगे, जिनके अंदर दोनों ही recessive genes होंगे, it will be lethal for them and it will cause anemia. उसकी वजह से the offspring, the person will die. So यहाँ पे these two genes are there. So the gene form HBS will have two variants.
this the dominant one, this the recessive one. Now इन दोनों का जो डिस्ट्रीब्यूशन है सेम पनेट स्क्वायर से कि if both the both the parents they are carriers means both of them they are heterozygous dominant. So ऐसे में the distribution with the help of Punnett square will be this one कि दोनों ही जो है वो heterozygous है and heterozygous means carrier यानी they are carrying one recessive. Now उनके offspring में this combination will lead to heterozygous dominant. This combination will again dominant. This combination again dominant, but this combination will be recessive. And in this way, 1 out of 4, the 25%, they are affected. Means they are carrying the lethal. Then 50%, the dominant one, the heterozygous dominant one, they will be carrier. Means they are carrying one copy of that lethal gene. And then 1 out of the 4 they will be homozygous dominant, means they carrying both the dominant genes and they are immune from it. और ये पता चला है Punnett square या फिर Mendelian genetics से. So the limitations here, so even if this principle is foundational but it doesn't explain all the traits, so some limitation are there that it doesn't talk about incomplete dominance. So if neither allele is fully dominant, like say the pink flower from red and white parents, so here according to Mendelian genetics, if the parents are red and white, then their offspring should be either red or white. Now the inheritance of pink flower, this incomplete dominance is not explained by Mendelian genetics. Then about codominance, if both the alleles are equally expressed, such as in A blood group, so यहाँ पे codominance की यहाँ पे कोई the binary between dominant and recessive, this it is not working here. कि यहाँ पे दोनों के दोनों जो alleles हैं, they are getting expressed. फिर polygenic inheritance, that some traits they are controlled by many genes. So जैसे height या skin color की बात करते हैं तो they have multiple loci. So ऐसे में कौन सा लोकस क्या एक्सप्रेस कर रहा है वो भी मेंडेलियन जेनेटिक्स नहीं एक्सप्लेन कर पाया. And finally, the role of environment in shaping the expression, it has not been answered by Mendelian genetics. फिर बढ़ते हैं थर्ड मेथड पे, twin studies. So the twin study is the nature versus nurture studies that studies the influence of both gene, nature and environment, nurture on human trait and behavior. So this method compares identical twins which have the same genes with the fraternal genes who carry only half their genes. So by studying these two types of genes, scientists they understand how a trait is controlled by heredity and how much influence external factors like upbringing, culture, diet and life experience exert on the expression of these traits. So first, the type of twins. So first are the monozygotic twins. So monozygotic or the identical twins. So they develop from the same fertilized egg, which splits into two embryos. So same one egg is there, which has been fertilized by a single sperm, but it's split into two embryos. So both the twins, both the identical twins, they share 100% of their genes, and they are always of the same sex. And any difference between those twins must be due to the environment क्योंकि जो genetic component है it is 100% same. फिर the dizygotic twins which are known as fraternal twins, so they develop from two separate eggs fertilized by two separate sperm, and in that case both of them share 50% of their genes like regular siblings, and they may be of same or different sexes. And here difference is वो नहीं वो निकालना होता है कि कितना डिफरेंस जो है वो जीन्स की वजह से है कितना एनवायरनमेंट की वजह से है. Now let's have a look at how twin studies work. So here researchers compare monozygotic with dizygotic twins in terms how similar or different they are for a specific trait. And the logic behind it is if monozygotic twins are more similar than dizygotic twins in traits,
then it means the genes are playing a major role. क्योंकि monozygotic twins, they are sharing 100% genetic material, whereas dizygotic twins, they are sharing 50%. So if the expression of any trait is more in monozygotic, then the genes, they have more role. But then if monozygotic and dizygotic, they are equally similar or equally dissimilar, it means the role is not played by genes but by environment. Here the common designs in twin studies. So first is the classical twin design, which compared monozygotic and dizygotic twins raised in the same household. Where the second design is the monozygotic twins reared apart, so which is a rare but powerful method. So in that, the same identical twin, they are raised in different environment, so उसमें फिर exactly पता चल जाता है कि what is more dominant, what is more influencing, the genetic material or the environment. Now the applications of twin studies. So they twin studies are quite helpful in understanding complex human trait and behavior. And some examples: first, they help in studying heritability of traits. First, twin studies help estimate how gene influence trait, and the influence of gene is seen on these traits such as intelligence, height, weight, personality, and behavioral traits. So, the example, because intelligence is highly heritable, so here, अगर intelligence particular individual में in monozygotic or dizygotic twin में, if parents are intelligent but the kids, they have some variation, तो यहाँ पे पता चल जाता है कि if it the role is played by genetics or environment. Where twin study also play a role in understanding genetic basis of mental illnesses, क्योंकि generally ये assume किया जाता है कि mental illness do not have any genetic basis, but still these mental disorders such as schizophrenia, depression, autism spectral disorder, all of them, they are studied by the influence of nature versus nurture in twin studies. So जैसे schizophrenia हम देख सकते हैं, there is a high concordance, means both twins are affected in monozygotic than dizygotic twins. So if one twin, in simple word, in one twin is affected from schizophrenia, so other twin is also affected. That's why the term concordance. But this happens in monozygotic, not in dizygotic. Where the similar such studies were similar such observations were found in other disorders such as depression, anxiety disorder, bipolar disorders. Where twin study also examined the heritability of complex disease. क्योंकि twin studies में many traits, they can be observed at close range, especially when we know that monozygotic have 100% similar genetic makeup and dizygotic has 50% makeup. So ऐसे में the two individuals, they can be observed closely to understand how much role is played by genes and how much influence does the environment have. So ये जो heritable disease है, like diabetes हो गया, asthma हो गया, heart disease हो गया, cancer susceptibility हो गया, so इन disease को study किया जाता है because they are multifactorial. Multifactorial means कि ये सारे disease जो हैं, ये दोनों चीजों से ये हेरिटेबल भी हैं और साथ में एनवायरमेंट की वजह से, ये लाइफस्टाइल चॉइसेस की वजह से भी ये डिजीज हो सकती है. सो इनको स्टडी किया जाता है. फिर एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल देख लेते हैं, डिप्रेशन इन ट्विंस. सो it is usually found that if one monozygotic twin has depression, then the other one has in 60% of cases. ये मोनोजाइगोटिक स्टडी है, मोनोजाइगोटिक ऑब्जर्वेशन है. बट डाइजाइगोटिक में सिर्फ 20% second dizygotic twin will inherit that depression. So here it suggests that depression has some genetic basis. फिर there is another side of story कि सिर्फ 60% केसेस ही हेरिटेबल हैं,
कि 60% केसेस ही विजिबल है। इसका मतलब है 40% मोनोजाइगोटिक केसेस ऐसे थे जिसमें डिस्पाइट हैविंग 100% जेनेटिक मेकअप द अदर ट्विन डिड नॉट इनहेरिट दिस डिसऑर्डर। सो इसका मतलब है कि अदर एनवायरमेंटल फैक्टर्स आल्सो play a key role. Where the advantages of key twin studies, first it provides insight into genetic versus environmental effects. Then many complex traits which are not purely genetic, not purely environmental can be studied. And then comes the limitation that it is assumed that uh, monozygotic and dizygotic they share similar environment, but it is usually assumed that monozygotic twins they are actually treated more similarly. Means कि उनके जो एनवायरमेंट में उनके जो इमोशनल बॉन्ड्स है या फिर जो उनका ट्रीटमेंट है, डोमेस्टिक ट्रीटमेंट है, ऑल ऑफ देम दे आर क्वाइट सिमिलर। ये आपने यूजुअली बहुत जगह पे देखा होगा। सो ऐसे में जब उनका एनवायरमेंट सिमिलर होता है तो दिस falsely inflate the role of genetics in twin studies. कि ultimately they are raised together, they are close to each other, they have close emotional bond, but unless they are separated, unless they are studied differently studied at some distance, तब तक पता नहीं चलेगा कि एक्चुअल में उनका जो बिहेवियर है, जो सिमिलर बिहेवियर है, वो सिमिलर एनवायरनमेंट की वजह से है या फिर उनकी सिमिलर जेनेटिक्स की वजह से है। सो दिस इन्फ्लेशन it needs to be observed, and that's why this assumption is there. फिर the second limitation is about sample size, क्योंकि मोनोजाइगोटिक ट्विंस रेज अपार्ट इज रेयर एंड डिफिकल्ट। तो यहाँ पे दोनों जो चीजें हैं वो सेम है कि मोनोजाइगोटिक ट्विंस वो लुक सिमिलर हुए, 100% जेनेटिक सिमिलैरिटी, वो दे आर यूजुअली रेज टुगेदर सिमिलर एनवायरनमेंट, और उसमें एक दूसरे के जो इमोशनल बॉन्ड्स हैं वो सब शुरू से साथ में रह रहे हैं, तो कॉपी करके मिमिक से या इमिटेशन से उससे वो सिमिलैरिटी जनरेट होती। बट अनलेस दे आर रेयर्ड अपार्ट, और वो चीज मुश्किल है कि ऐसा सैंपल साइज लेके आना है, क्योंकि ऑब्जर्वेशन के लिए, फाइनल एनालिसिस के लिए एक लार्ज सैंपल साइज चाहिए। कम से कम हम 30-40 मोनोजाइगोटिक ट्विंस दैट आर रेज्ड अपार्ट एंड ऑब्जर्व, वो चीज मुश्किल है। फिर epigenetics is not accounted for. Epigenetics means that certain chemical modifications, certain genetic factors that can be turned on and off. So this thing has not been taken into account. Now let's move on to Sib-Pair method. So Sib-Pair method or sibling pair method, it is a genetic research technique that compares siblings, especially those who are affected by the same condition. So here siblings who share about 50% of their genes, they are studied कि इससे those genetic reasons can be highlighted that are involved in causing the gene. Simple reason, siblings जो है they share 50% of the genes. तो दो siblings हैं, one affected, one non-affected. तो इसमें अगर दोनों का जो जेनेटिक मेकअप है उसको स्टडी किया जाए, तो जो peculiarity, जो abnormality है, जो अनॉमली है, इट कैन बी हाईलाइटेड कि पर्टिकुलर रीजन पे ये क्रोमोसोमल अबनॉर्मेलिटी है या फिर इस रीजन में ये प्रॉब्लम है, उससे वो कंपैरिजन से हाईलाइट हो सकता है। नाउ हाउ डज दिस मेथड वर्क? फर्स्ट such sibling pairs are selected, and at least one sibling must have the condition that is being studied, like asthma, diabetes, and usually both siblings are affected. So उससे जो the chances of finding shared genetic markers can be found, ठीक है, उससे पता चल जाएगा दोनों ही अफेक्टेड हैं, तो फिर दोनों में जो सेम कॉमन एरियाज हैं विच आर अफेक्टेड वो दे कैन बी ऑब्जर्व। फिर द डीएनए ऑफ बोथ द सिबलिंग्स आर एग्जामिन्ड, फिर वो डीएनए सेगमेंट्स जो है द अफेक्टेड सेगमेंट उसको स्टडी किया जाता है, देन द जीन्स दैट आर रिलेटेड टू डिजीज, द पॉसिबल कॉजेज आर फाउंड आउट, then
the advanced software and statistical tool they are used to determine the likelihood of particular gene or any reason that is linked to a disease. Overall, it's analysis. ये last step जो है ये तो एक technical step है, but in simple term, sibling pairs are chosen और उसमें at least one should be affected. दोनों affected है तो ठीक है, फिर दोनों का DNA जो है it is compared, फिर उसमें जो वो DNA segments जो है वो पता किए जाते हैं which are affected. फिर the question why use siblings? First, they have shared genetic background around 50%. Then they usually share the same environment, which reduces external variation. And then this method does not need the study of parents. Now the applications of Sib-Pair method. So first, it identifies genetic risk factor for diseases. So certain gene-linked disease such as type 1 diabetes. So यहाँ पे sibling with this disease, sibling with diabetes, they often share variants in HLA, human leukocyte antigen. That so ये जो key highlight हुआ है, the reason that has been observed, ये दोनों sibling के DNA compare करके हुआ है. In other words, if the two siblings are diabetic, then both of them they share a variant of HLA, human leukocyte antigen. Then studies have also found common gene variant in the affected siblings who have epilepsy attack. Similar such gene regions are found for asthma, obesity, autism, schizophrenia, and hypertension. And the second application is in GWAS, that is genome-wide association studies. So in this tool, GWAS, the Sib-Pair data, it is used to validate association that is found in broader population. So it is similar to finding pattern in a sibling pair, then inflating or extrapolating that observation with the larger database. So in that way, the researcher they try to find if the occurrence of disease, the presence of the genetic reasons, the presence of affected genetic reason have any extrapolation, have any precedent in the larger database. So इससे genetically linkage analysis मिलता है, genetic linkages मिल जाते हैं कि whether certain genes or markers they are inherited along, inherited at a larger population in the whole family, in extended family, in larger tree diagram. And this Sib-Pair method is also help play a role in studying hereditary disease among isolated or tribal population. So यहाँ पे आप example देख सकते हैं type 1 diabetes and HLA reason. So type 1 diabetes is a autoimmune disease when body attacks its own insulin producing cells. जो diabetes का simple phenomena है. So जो Sib-Pair methods में उसमें observation में पता चला है कि जो siblings हैं which are diabetic with the type 1, they usually have the similar variant in the HLA region on the chromosome 6. So ये एक observation जो है broader level पे मिला है कि जितने भी Sib-Pairs हैं उन सब के अंदर जो inflamed region है it is the HLA1 on the chromosome 6. Now the advantages of Sib-Pair method. First, no need to study parents. Pair, it is effective for polygenic traits. Polygenic traits means if certain disease, certain trait has locus on many genes, if it is controlled by many genes. So ऐसे में दो जो siblings हैं उनके genetic makeup, उनका DNA compare करके पता चल जाता है कि particular trait जो है उसका affected region कौन सा है. Then this is applicable to common disease. So जो single gene जो disorders होते हैं उनमें ये study possible नहीं है because they are like one-off events. But common disease जो है asthma, diabetes वो सब पता चल जाती है. Now the limitations. First, limited genetic variations क्योंकि जो siblings हैं they share 50% of DNA. And जो unrelated individuals होते हैं उनमें तो फिर DNA variation जो होता है बहुत
छोटा हो जाता है, सो फिर जो लार्जर एसोसिएशंस होते हैं विच इज डन बाय गॉस स्टडी, द एक्सट्रापोलेशन, इट इज नॉट हेल्पफुल, क्योंकि 50% डीएनए शेयरिंग में भी अगर कोई चीज, कोई वेरिएशन मिला है, इट कैन नॉट बी एक्सट्रापोलेटेड एट द लार्जर पॉपुलेशन. लाइक if you can say I and my brother, we if a certain disease, if it is found in us and उसका कोई genetic variant मिला है, that variant cannot be extrapolated to someone who is living in Delhi or in Kashmir or in Tamil Nadu. So that's that again a limitation. फिर second limitation is the need for affected sibling pair. So this method works best when both siblings are affected. So वो भी एक rarity है. Where it is not effective for rare single gene disorders because this method works for complex polygenic traits. Single gene disorders के लिए it's like finding needle in the haystack. Polygenic traits में तो पता चल जाता है डीएनए कंपेयर से, बट सिंगल जीन के लिए तो फिर उसके लिए जो पूरा जीनोम है वो पूरा वो स्टडी करना पड़ता है. Now let's move on to population genetics. Well, I assume that it's best that I rest it here. जो बाकी के दोनों जो हैं population genetics and molecular genetics वो एक separate lecture में cover कर लेंगे, because otherwise it is going to affect the quality. वैसे भी ये lecture जो है करीब 1.5 घंटा का हो गया है. So see you in the next lecture. Thank you very much.